Hello everyone and welcome to the ACE JEE channel. Today, I, Alok Narayan, who is currently studying in BITS Pilani and pursuing my bachelor's degree in mechanical engineering in the second year, is going to help you solve these physics problems. So, let's begin. The question goes as a horizontal spring block mass system and mass of the block as given m2 and spring constant k is oscillating on a smooth surface with amplitude a. यानी इस फिगर में ये जो ब्लॉक शोन है इसका मास हम लोग को गिवन है m2. For simplification, let's simply assume it m, right? And this spring has spring constant k. If at the mean position an identical block is kept on it so that they move together after, what is the new amplitude? So initial condition क्या थी कि ये जो ब्लॉक मास m and spring k constant के साथ ये ऑसिलेट कर रही थी विथ एम्पलीट्यूड a. ओके, व्हाट हैपेंड कि जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे वापस आया तब इस पे एक सेकंड ब्लॉक ऊपर में इसके प्लेस कर दिया गया. समथिंग लाइक दिस एंड इसका भी मास था m. सो अगर मैं बात करूं इन दोनों के टोटल मास की तो दैट इज व्हाट 2m. सो अब नया सिस्टम जो ऑसिलेट कर रहा है वो है दो ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड ऑसिलेटिंग विद सम न्यू एम्पलीट्यूड. लेट्स से द न्यू एम्पलीट्यूड इज व्हाट a डैश, राइट? सो अब इस क्वेश्चन से प्रोसीड कैसे करना है? व्हाट वी विल डू इज कि हम सबसे पहले इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इन बोथ द केसेस, वन द एक्सट्रीम एंड वन एट द मीन. सो लेट्स से वी राइट एनर्जी व्हेन इट इज एट एन एक्सट्रीम पोजीशन, राइट? सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? हाफ k x square, where x is what? A, because the block is on the extreme position. So half k a square. This is what? Total mechanical energy at the extreme position. Now let's write total mechanical energy on the mean position, right? On the mean position. That is what? Half m. And let's say the initial velocity of the block at mean position is u. So half m u square. It is what? Total mechanical energy, right? And since total mechanical energy is supposed to be conserved, hence what? Half m u square is equals to half k a square, right? Now after the second block is placed, what happens is that the friction in between the two blocks, and obviously they would be acting in the opposite directions. So ये जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, दिस विल ट्राई टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन. एंड इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि देयर विल बी सम लॉस ऑफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी वी हैव. बट क्योंकि हमने ब्लॉक वर्टिकली प्लेस किया सेकेंड वन, लाइक व्हाट हैपेंड, दिस वाज माय फर्स्ट ब्लॉक एंड वर्टिकली मैंने इसके ऊपर ये सेकेंड ब्लॉक प्लेस किया. सो इसके कारण क्या होगा कि अगर कोई मोमेंटम में चेंज आना भी होता तो दैट वुड हैपन एट इन द y डायरेक्शन, राइट? बट क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम का चेंज नहीं आया इस ब्लॉक के प्लेस करने पर फर्स्ट ब्लॉक पे, राइट? सो यहां हम क्या आप देखेंगे कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं किसकी, मोमेंटम कंजर्वेशन की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, सो वो क्या होगी, m u
initial momentum and that will be equal to final momentum. उस केस में मास कितना होगा 2m एंड लेट से जब वो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करने लगे तो मीन पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी थी व्हाट v. सो यहां से हमें u और v में रिलेशन मिले. रिलेशन क्या होगा v इज इक्वल्स टू u बाई 2. अब क्या करते हैं हम फिर से वही पहले वाला काम करेंगे. कौन सा हम लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर एंड मीन पोजीशन पर. सो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं लेट से. सो अब हम क्या करते हैं अब हम लिखते हैं मीन पोजीशन के लिए एनर्जी राइट. इसके लिए मीन के लिए वो क्या होगी हाफ, क्योंकि नया मास 2m है ब्रैकेट में 2m एंड वेलोसिटी क्या नहीं है v स्क्वायर राइट. नाउ अगर हम अब रिप्लेस कर दे v को इनिशियल वेलोसिटी u से तो रिलेशन कैसा होगा देखते हैं राइट. ये आ गया u स्क्वायर बाई 4. क्यों क्योंकि v था u बाई 2 जैसा हम लोग इस प्रीवियस रिलेशन में देख सकते हैं. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 4. ओके सो आगे बढ़ते हैं. तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा आएगा हाफ ऑफ m u स्क्वायर राइट. एंड अगर प्रीवियस पेज पे चल के देखें तो यहाँ से ये रिलेशन पे ध्यान देना हाफ एम यू स्क्वायर इज हाफ के ए स्क्वायर. यूजिंग दिस रिलेशन मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है हाफ. यहाँ से उठा रहा हूँ ठीक है. ब्रैकेट के अंदर हाफ एम यू स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हाफ के ए स्क्वायर से राइट. और जब ये कर दिया तो हमने मीन पे काइनेटिक एनर्जी लिख ली राइट. अब क्या करते हैं इसी केस में एक्सट्रीम पे लिखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे राइट. तो वो क्या होगी हाफ के नया एम्पलीट्यूड ए डैश. क्यों क्योंकि पहले ब्लॉक ए तक जा रहा था अभी ब्लॉक सिर्फ ए डैश तक जाएगा तो हाफ के ए डैश स्क्वायर. एंड क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए सो ये वाली जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू दिस वन राइट. तो हम लिखते हैं हाफ ऑफ हाफ के ए स्क्वायर यानी न्यू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के ए डैश का स्क्वायर राइट. नाउ हाफ से हाफ काट दो ए से ए काट दो एंड जब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा a बाई स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू a डैश. सो ये आ गया फाइनल आंसर एंड इस अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हुआ व्हाट सी. सो नाउ नेक्स्ट नए क्वेश्चन पे चलते हैं. So now we come to the next question. It goes as two identical particles of same mass are shown just before collision and just after the collision. It's actually then v1 by v2 is. So as you can see in this question, initially there is no momentum along y direction. Why? Because this, let's say this is mass 1 and this is mass 2. So initially my mass 1 is moving along x-axis. So let's write the momentum equation along x-axis, right? So m1 into its velocity, which is 9, plus m2 and its velocity, since it's sideways, so it's 0. So this should be equal to m1 into the velocity component of this will be v1 cos 30 plus m2 v2
cos 30 degrees, right? And since m1, m2 both are equal to m, so I can simply cut this on both the sides of the equation. It hardly matters, right? Now, this side we get 9. That is equal to v1 cos 30 degree. And cos 30 degree is what? Root 3 by 2. Plus, similarly for v2 into root 3.2, right? So let's go to the next page. And now we will write the momentum conservation equation along the y-axis. So first, let's go to figure. As you can see, initially there's no y component of velocity for any of the masses. So initially the momentum along y-axis is what? Right, 0. And let's take the velocity component of v1 along y-axis. So it will be what? So it will be in this direction, and the value would be v1 sine 30 degrees, right? And similarly for v2, we can do it v2 sine 30 degrees, right? So on the next page, let's go. So initially the momentum along y-axis was 0, right? Now after the collision, it is m1 v1 sine 30 degrees and plus m2 v2 sine 30 degrees. But here's a catch. This v2 sine 30 degree has negative x direction. So, but here's the catch. This v2 sine 30 degree is pointing towards negative y direction, as you can see in this diagram, right? It's below. So now we will have to add a minus sign in front of it, like this, right? So when you will rearrange it, it will give you m1 v1 sine 30 degree equals to m2 v2 sine 30 degrees. And as we know, m1 is equal to m2, so we can simply cancel it. Also, sine 30, we can also cancel that, right? So from here, you simply get v1 is equals to v2, right? So basically your question asked only this thing. What's the ratio? So from here, you can simply write v1 by v2 is 1. So I guess you understood this. So thank you, and please like, share and subscribe.